class. So guys, today we are going to discuss about October-November 2019 variance 22. All right. The diagram shows part of the periodic table. Answer the question using only the elements shown in the diagram. Write the symbol for an element which forms stable ion of type X2 minus. X2 minus. बेटा ये ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. तो ग्रुप 6 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब 2 माइनस चार्ज कैरी करते हैं. तो आप O2 माइनस भी लिख सकते हैं. आप S2 माइनस भी लिख सकते हैं. आप SE2 माइनस भी लिख सकते हैं. तो इन तीनों में से कोई भी एक लिख दीजिए बिकॉज यू हैव 1 मार्क का पार्ट. लाइट ग्रीन गैस एट रूम टेम्परेचर. तो इसका आंसर होगा बेटा क्लोरीन. Forms an ion which gives you a yellow precipitate on addition of aqueous silver nitrate. आप जानते हैं कि येलो प्रेसिपिटेट उस aqueous silver nitrate के उस वक्त आते हैं जब आप आयोडाइड आयंस यूज करते हैं. तो आप आयोडीन लिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज यूज्ड टू मेक फूड कंटेनर्स. फूड कंटेनर्स बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं. is a diatomic gas which forms 78% of dry air. तो 78% dry air के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है. तो आप N लिखिए यहाँ पर. Question number 2. Magnesium is a metal. State 2 properties which are characteristic of most metals. Metals की characteristic properties. Malleable होते हैं, डक्टाइल होते हैं, शाइनी होते हैं, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं. मैंने 4 बताई हैं, 4 में से कोई 2 लिख दीजिए. तो मैंने ये 2 लिखी हैं आपके लिए. इसके बाद एक कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एटम. शो ऑल इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम के सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और मैग्नीशियम के थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 2. Magnesium reacts with bromine to form magnesium bromide, MgBr2. Magnesium bromide is an ionic solid at room temperature. Explain in terms of movement of electron how magnesium bromide form by the reaction of magnesium with bromine. तो आप बताइए. Magnesium loses electron from its valence shell to complete its octet. Bromine gain electron in its valence shell bromide ions. Magnesium ions and bromide ions combine together via electrostatic attraction
to give NgBr2. ठीक है बेटे? Suggest one other physical properties of magnesium bromide. Since magnesium bromide is an ionic compound, which means it has high melting and boiling point. Deduce the products formed at the anode and cathode when concentrated aqueous sodium bromide is electrolyzed. The product at anode हो जाएगा chlorine, क्योंकि solution concentrated है. Product at cathode हो जाएगा hydrogen gas. Chlorine reacts with aqueous magnesium bromide. The product are aqueous magnesium chloride and aqueous bromine. Construct the ionic equation for this. बेटा हम सबसे पहले तो कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि ये आपके पास MgBr2 है और हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा ब्रोमीन में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा MgCl2 में. ठीक है, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम आयन स्पेक्ट्रेटेड आयंस होंगे, कैंसिल होंगे, तो फाइनल इक्वेशन ये आ गई आपके पास. अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो Br नेगेटिव प्लस Cl2 एरो 2Cl नेगेटिव प्लस Br2. Explain why aqueous magnesium chloride does not react with aqueous bromine. Because reactivity of bromine is lower than that of chlorine. Because bromine is less reactive than chlorine. Petroleum crude oil is a mixture of hydrocarbons. Describe and explain how petroleum is separated into different hydrocarbon fractions. In your answer, include a description of fractional distillation in an oil refinery. So बेटा हम इसके लिए सिंपल सा फॉर्मेट ये कर लेते हैं. तो आप बताइए यहाँ पर सबसे पहले crude oil is heated and at high temperature and then introduce it in the fractionating column. ठीक है, during fractional distillation
Separation can be done on the basis of their boiling point larger hydrocarbons have high boiling point and will collect them in the bottom the smaller hydrocarbon have low boiling point and thus will collect from the top. ठीक है जी और बेटा इसमें जो डायग्राम है वो हमने आपको एनर्जी चेंजेस में बना के दिए तो डायग्राम इन नोट्स आपको अगर वो याद हो तो आप यहाँ बना के दे सकते हैं एग्जामिनर को नेक्स्ट state one use for each of these hydrocarbons fraction kerosene तो बेटा आपको मैंने लिखा है कि केरोसिन जो है वो एयरक्राफ्ट फ्यूल के लिए यूज होता है used as aircraft fuel naphtha naphtha जो है वो बेसिकली फीड स्टॉक के तौर पे यूज होता है इन केमिकल इंडस्ट्री The refinery gas fractions contain methane, ethane, and propane. To which homologous series do these hydrocarbons belong? सब compounds के end में एन है इसका मतलब they belongs to alkane homologous series. With the general formula of the homologous series which contain methane, ethane, and propane belong. तो alkane का general formula है CnH2n plus 2. The exhaust from diesel engines contain carbon monoxide. Explain how carbon monoxide forms in the diesel engine due to incomplete combustion of fuel. Due to incomplete combustion of fuel. Describe one effect of carbon monoxide on human health. Since it is toxic, so it destroys hemoglobin. ठीक है? The equation shows the reaction of calcium carbonate with hydrochloric acid. ये equation आ गई है. The rate of this reaction can be determined by measuring the decrease in mass of reaction mixture. Describe one other method of following the progress of this reaction. आप जानते हैं कि जब रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट कर लूंगा इन गैस सिरिंज एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स
collect the volume of carbon dioxide in gas range at different time interval. Why time interval? जाहिर सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए टाइम तो चाहिए मुझे. Describe and explain using ideas about collisions between particles how the rate of reaction changes when same mass of calcium carbonate is used in smaller pieces. So when you use smaller pieces, meaning you are increasing the surface area. When you are increasing the surface area, number of reacting particles also increases, and so rate of reaction increases. The smaller pieces increases the surface area of calcium carbonate. So number of reacting particles increases, hence collision frequency increases. Thus, rate of reaction increases. Describe and explain using idea about the collision between particles how the rate of reaction changes when temperature is increased. When temperature is increased, number of collisions, rate of reaction changes. Describe and explain. All conditions stays the same. Obviously, increasing temperature increasing temperature increases the kinetic energy. Effective collisions increases, meaning collision frequency increases. More molecules have energy greater than activation energy. Thus, rate of reaction increases. Question is next part, calculate the minimum mass. Calculate the minimum mass of calcium carbonate in gram needed to produce 16.8 cm cube of carbon dioxide at room temperature and pressure. Answer three significant figures. Okay, guys, the first thing is moles of carbon dioxide gas calculate करें.
तो ये हो जाएगा 16.8, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 24,000 cm³ से। एक मिनट चेक, 16.8 divided by 24,000, it's going to be 7 into 10 to the power minus 4 moles। आप जानते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो 1:1 का है। अगर आपने 7 into 10 to the power minus 4 मोल्स कैलकुलेट किए हैं तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास कितने आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे 7 into 10 to the power minus 4 मोल्स। आप जानते हैं एमआर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम खुद निकालेंगे पीरियोडिक टेबल यूज करके। ये हो जाएगा कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन टाइम्स 3, 40 प्लस 12 प्लस 16 into 3, इट्स गोइंग टू बी 100। तो मैं इस एमआर को मोल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मास मिल जाएगा। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू 100 into 7 times 10 to the power minus 4। तो यहाँ से into 100 0.07 ग्राम, यहाँ लिख देते हैं 0.07 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट, describe a test for carbon dioxide, pass the gas through lime water। फिर आप बताएंगे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। फिर वो आपसे कह रहे हैं calcium hydroxide can be used to control the pH of soil। Explain how calcium hydroxide controls the pH of soil। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है और ये सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आप बताइए कैल्शियम hydroxide is an alkali, so it is used to neutralize the acidity of soil। जब सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा तो जाहिर सी बात है पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। thus pH increases। Next, the table shows some properties of 4 group 1 elements। ठीक है, complete the table by estimating the melting point of sodium, the atomic radius of rubidium। यूज अच्छा, आप नोट करें मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब 181 से कम हो और 63 से ज्यादा हो तो यू कैन एस्टिमेट एनी वैल्यू, राइट, बिकॉज इज एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट का मतलब you can estimate any value, you can suggest any value which is lower than 181 and greater than 63। तो बेटा हम क्या देते हैं 120। ओके, द एटॉमिक रेडियस ऑफ रुबीडियम, आप नोट करें एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली एस्टिमेट करने के लिए 0.235 से ज्यादा होनी चाहिए। यू कैन एस्टिमेट एनी वैल्यू। तो आप 0.235 है तो आप 0.3 कर दीजिए, 0.30, 0.27 भी हो सकता था, 0.29 भी हो सकता था,
0.28 भी हो सकता था. You can suggest any, you can estimate any value. Use the information in the table to suggest why it is difficult to predict the relative thermal conductivity of potassium. Why it is difficult to determine the relative thermal conductivity of potassium? बेटा इसलिए क्योंकि कोई ट्रेंड फिक्स हो नहीं रहा इसके अंदर. ठीक है, कम से ज्यादा हुई फिर कम हो गई, इसका मतलब देयर इज नो फिक्स ट्रेंड. Sodium reacts with oxygen to produce sodium oxide. Construct the equation for this reaction. The sodium is reacting with oxygen. The sodium is reacting with oxygen, converting into sodium oxide. तो मैं यहाँ 4 कर लेता हूँ, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, इक्वेशन बैलेंस हो गई. What type of oxide, acidic or basic, is sodium oxide? Metal oxide is always basic oxide. जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं. आप इस तरह से लिखते हैं बिकॉज सोडियम so it forms basic oxide. Explain in terms of ease of formation of ions why copper does not react with aqueous sodium sulfate. बिकॉज सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो कम है, कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो सोडियम से कम है. तो बताइए कॉपर is less reactive than sodium. So it cannot form copper to ions easily. As sodium does. ठीक है. Hydrated sodium iodate 5 has the formula. It has a relative formula mass of 288. What is the value of X in this? So बेटा सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप MR of NaIO3 निकालोगे. Sodium is 23, iodine is 127, oxygen is 16 into 3. So बेटा आपके पास ये हो जाएगा 198, 127. ठीक है. मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 288 minus 198 is going to be वो एक मिनट बेटा it's 288 minus 198 it's going to be 90. मैं मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेता हूँ. 90 को डिवाइड कर देते हैं 18 से, ये हो जाएगा 5. इसका मतलब x की वैल्यू इज 5.
Next, butanoic acid is a carboxylic acid. Draw the structure of butanoic acid to show all the atoms and all the bonds. Okay. 1, 2, 3, 4. ये COH हो गया, ये CH2, ये भी CH2 और ये भी CH3. ठीक है. Describe the movement and arrangement of particles in liquid butanoic acid. Liquid में obviously irregular arrangement, और irregular arrangement random motion. ठीक है. The melting point of butanoic acid is -4 degree. The boiling point of butanoic acid is -166. Reduce the physical state of butanoic acid at 0. Explain your answer. और जाहिर सी बात है जब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाओगे वो लिक्विड हो जाएगा. -4 पे सॉलिड है, 166 पे गैस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड होगा ना बेटा. और उसकी वजह क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट से कम है. बिकॉज is greater than boiling point and no. It's greater than melting point and lower than boiling point. सही. The equation for the reaction of butanoic acid with sodium carbonate is shown. A student added 5.28 gram of butanoic acid to 56 cm cube of 0.5 mole per dm sodium carbonate. Show by calculation that butanoic acid is in excess. So that's an interesting thing. सबसे पहले तो MR of butanoic acid determine करो. ट्वेल्व टाइम्स 4 करो क्योंकि 4 कार्बन एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 16 ऑक्सीजन है, टाइम्स 2 करो तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 88. अब मैं इसके थ्रू मोल्स ऑफ ब्यूटेनिक एसिड निकाल लेता हूं. फाइव 5.28 को हम डिवाइड कर देते हैं 88 से. तो 5.28 divided by 88 is going to be 0.06 moles. ठीक है. सिमिलरली मैं यहाँ से मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट करूंगा तो 1000 cm³ में आपके पास मोल्स आ रहे हैं 0.500 मोल. राइट. तो अगर आपके पास 56.0 cm³ है तो बताइए कितने मोल्स हैं. जो जाएगा 0.5 into 56 divided by 1000. ये हो जाएगा आपके पास 0.028
8 moles of सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ओके, याद रखिएगा कि एसिड और सोडियम कार्बोनेट में 2:1 का रेशियो है। अगर आपने 0.028 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताओ एसिड कितना होगा? ये हो जाएगा 0.056। ठीक है, अब आप नोट करें ये है 0.06 और ये है 0.056। तो जाहिर सी बात है ब्यूटेनिक एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर आ रहा है। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं ये 0.028 है और ये 0.06 है, तो इसका मतलब ये एक्सेस अमाउंट के अंदर है। ये करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए ब्यूटेनाइट एसिड इज इन एक्सेस। फिर है आपके पास मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ब्यूटेनिक एसिड, प्रोडक्ट्स आर मैग्नीशियम ब्यूटेनाइट एंड हाइड्रोजन, कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम है और मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूँ ब्यूटेनिक एसिड से, इसका फॉर्मूला ये गिवन है। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम ब्यूटानोएट बनाएंगे विच इज C3H7 COO इक्वल टू Mg प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि एथेनोएट प्रोपेनोएट टाइम्स 2 मोल्स हो गए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। One method of determining the pH of aqueous butanic acid by using the pH meter. Describe a different method of determining the pH of aqueous butanic acid. तो आप यूज कर लीजिए in order to determine the pH of aqueous butanic acid. Use universal indicator and then जो कलर आपको आएगा उसको मैच करोगे कलर चार्ट से, and then match the color from color chart. आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसका कलर चार्ट होता है, तो जो भी कलर आता है आप उस कलर से उसको टैली करके पता कर लेते हो। Sulfuric acid is made by the contact process. Delta H की value is exothermic -197. Name the catalyst used in the contact process. Vanadium 5 oxide. Describe how and explain why the position of equilibrium in the reaction is altered when temperature of the equilibrium mixture is increased at constant pressure. Reaction is exothermic. आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑफ ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस इज बिकॉज forward reaction is exothermic
So increasing temperature favors equilibrium towards left hand side. The pressure of the equilibrium mixture is increased at constant pressure या constant temperature. जब pressure को increase करते हैं ना तो equilibrium हमेशा उस direction में जाता है जहाँ number of moles कम होते हैं. So number of moles product side पर कम है इसलिए equilibrium forward चला जाएगा. Increasing the pressure favors equilibrium towards right hand side because of less number of moles. The final step in the manufacture of sulfuric acid is an exothermic reaction. On the axis, draw a level energy profile diagram for this exothermic reaction. Reactants and products, enthalpy change of reaction है, activation energy है. क्योंकि एग्जामिनर ने कह दिया कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी. और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट शो करने के लिए कह रहे हैं तो ये हो जाएगा H2S2O7 प्लस H2O और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 2H2SO4. ये हो जाएगा आपके पास. ठीक है. ये आपकी डेल्टा H हो गई. और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी. Next, air is the raw material used in the manufacture of sulfuric acid. Name one other raw material used in the manufacture of sulfuric acid. बेटा मैंने आपको लिखा है सल्फर भी होता है रॉ मटेरियल और वाटर भी होता है. वाटर को हम वेस्ट गैसेस को वॉश करने के लिए यूज करते हैं ना, मैंने लिखवाया आपको. State one major use of sulfuric acid: to make fertilizer, to make explosive, question number 8. Phosphorus is an element in group 5 of the periodic table. One of the isotopes of phosphorus is this. Deduce the number of electrons, neutrons and protons in this isotope of phosphorus. Atomic number 15 है, इसका मतलब इसमें 15 protons होंगे, 15 electrons होंगे और 16 neutrons होंगे. Define what is meaning of the term isotope. Same number of proton and electron but different number of neutron. इसके बाद वो कह रहे हैं phosphorus react with potassium chloride 5 to form potassium chloride and phosphorus 5 oxide. Phosphorus react कर रहा है potassium chloride 5 से. As a result, potassium chloride और P4O6 बन रहा है. Complete the equation. तो
phosphorus 5 oxide. बेटा ये बनेगा आपके पास ये हो जाएगा 5 KCl और 5 to 15 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 3 कर दीजिए। अब यहाँ फॉस्फोरस जो है वो 6 हो गए, इसलिए मैं फॉस्फोरस को यहाँ 6 कर देता हूँ। The structure of compound of phosphorus is shown, ठीक है। Introduce the molecular formula of this compound. 1 2 3 phosphorus हो गए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गए, तो H5P3O कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। Phosphorus reacts with chlorine to form phosphorus trichloride PCl3. Draw dot and cross diagram for a molecule of phosphorus trichloride. Only include the outer shell electrons. ट्राइक्लोराइड है, सही है जी। ये फॉस्फोरस है और ये तीनों के तीनों क्लोरीन है। फॉस्फोरस के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, 1 2 3 4 5, because it is found in group 5 of the periodic table. Chlorine belongs to group 7, so it has 7 valence electrons represented by dot 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. The equation for the reaction of phosphorus with copper 2 ions is shown. Identify the oxidizing agent. Explain your answer. Oxidizing agent दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो आप नोट करें, कॉपर आयंस फॉस्फोरस को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपर आयंस because it reduces because it gains electron during this reaction, ठीक है। Question number 9. Name one other natural polymer. तो प्रोटीन भी, अच्छा प्रोटीन कह दिया उन्होंने, तो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, स्टार्च कह सकते हैं। ठीक है। He is asking describe how protein can be hydrolyzed to amino acids. मैंने लिखा है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइज होते हैं under heat in the presence of hydrochloric acid. Proteins are hydrolyzed to HCl under heat. इसको कहते थे हम acid hydrolysis. The structure of the amino acid alanine is shown. Alanine can be polymerized to form polyalanine.
Draw the partial structure of polyalanine to show 2 repeating units. Okay, आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एलानिन के NH2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा, तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूं कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, NH2 CH3 COH plus NH2 CH3 COH। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर, यहाँ से OH एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास NH CH CH3 CO NH CH3 CO। तो एक रिपीटिंग यूनिट आपका ये हो गया और दूसरा रिपीटिंग यूनिट आपका ये हो गया। ठीक है, the structure of amino acid serine is shown. Serine can form polymers with amide linkages. Serine can also form polymers with different linkages. Okay, amide उस वक्त बनता है जब serine का COH NH2 से रिएक्शन कर रहे हो, different linkages. Name this linkage and explain how it is formed. आप जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, ये दोनों आपस में मिलकर एस्टर बनाएंगे तो एस्टर लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब भी आपस में रिएक्शन करते हैं एस्टर लिंकेज बनता है। Alcohol and carboxylic acid react together to give ester linkage. Paper chromatography can be used to separate a mixture of amino acid. The apparatus used is shown. बेटा ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हम कल पेपर कर रहे थे तो उसमें क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम पूछा था, तो आप ये डायग्राम याद कर सकते हैं, एज इट इज लेबल करके लिख दीजिएगा वहां पर। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कल हमने रिएक्शन किया था ना, उसमें वो मांग रहे थे आपसे डायग्राम, डायग्राम ये वाली याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे तो हमने लेक्चर में भी बनाई हुई है, बट एग्जैक्टली ये वही डायग्राम है, बट ये बहुत आसान है। Why should the baseline is drawn in pencil and not in ink? So that baseline cannot interfere with the sample. सही है, so that this pencil baseline do not overlap or interfere with the sample. यहाँ लिख देते हैं important diagram. When the separation of the amino acid is complete, the chromatography paper is sprayed with a lubricating agent. Explain why. To visualize the spots, to visualize the solutes.
ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं the diagram shows the chromatography paper after it has been sprayed with the lubricating agent. Calculate the RF values of the amino acid labeled S. RF value calculate करने के लिए कह रहे हैं amino acid S का। तो बेटा एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट हो गया, इसको स्केल यूज करके डिटरमिन कर लीजिए। तो स्केल है नहीं मेरे पास, अगर आप लोग यूज करें और मुझे बता दें वैल्यू, कैन यूज इट। और स्पॉट एस है, स्पॉट एस के लिए यहां से लेकर यहां तक देख लें, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस traveled by solvent which you can measure through scale, और ये हो जाएगा डिस्टेंस traveled by solute, ये भी आप स्केल से मेजर करेंगे। just give me 30 seconds, I'll scale it and let you know. Okay. Let me check. How much value is this? This is actually 3.123. 3.3 एक रफ वैल्यू ले लेते हैं, 3.3 है यहाँ, ये है बेटा मेरे पास 5, 6, 7, ये है तकरीबन 4.9। Let's find out 3.3 divided by 4.9. 3.3, just hold on a second please. 3.3 divided by 4.9, so it's going to be 0.795. RF value for spot S is 3.3 divided by 4.9, so it's going to be 7.795. तो यहाँ लिख दीजिए 0.795, ठीक है। ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। एटीपी स्टार्ट करते हैं आफ्टर 3 मिनट्स, ओके।